the program. This call is now being recorded. Good afternoon, respected professors and all my dear friends. Greetings from EcoClub of Dyal Singh College. We wholeheartedly welcome and honor all of you for being a part of such an auspicious celebration on Constitution Day. EcoClub of Dyal Singh College is committed to working towards the betterment of environment and has been relentlessly working towards the same. And today, to create awareness on the Indian Constitution, we are celebrating Constitution Day. Samvidhan Divas or Constitution Day is celebrated every year on 26th of November to create awareness on Indian Constitution, all the fundamental rights we have, and obviously its main architect, Dr. B.R. Ambedkar sir. Without a constitution, a government is like a cruise without radar, which can easily stray off the path of social welfare. A law abiding citizen must be well aware of the fundamental rights they have to avoid any exploitation by wrong hands. Coming back to our event, today on Constitution Day, Eco Club of Dyal Singh College has organized a debate competition on the topic of this house believes that economical liberalization has threatened the India's environment and natural resources. But before we go ahead with our event, I would like to request our honorable teacher convener, Dr. Harleen ma'am, to please address the audience and give her blessings for the success of our event. Ma'am, over to you. Thank you, Ashu. Thank you so much. Good afternoon, everyone. This is Dr. Harleen Dabur from Geography Department, and I'm working as convener of the Environment Club right now. At the onset, I would like to congratulate the entire Environment Club team, all the teachers and all the students who have organized such a wonderful program, which is very relevant in today's time also. In this regard, on this day, we have two things in focus, and we are basically concentrating on two things. And the purpose is that one, that we have to make awareness, we have to build awareness towards our constitutional rights in the youngsters, in the young generation of our college students. And second would be how we can make this Diwali green event and not harm our environment and not create pollution, which always is a main problem on Diwali. And in this regard, today we have a special invitee, Dr. Anurag Pandey from the Political Science Department of our very own college, Dyal Singh College, and he'll be telling us about our constitutional rights and duties. And we are very grateful to him that he has spared his valuable time to celebrate this 71st Constitution Day. And like Ashu said, it is always celebrated on 26th of November. But since university will be holding its exams during that time, we are celebrating it a little ahead of the assigned date. And with these few words, I would like to welcome everybody on today's program and also wish success to the Eco Club in furthermore programs that we are planning ahead. We are also working on reducing wastage, reducing food wastage this year. Last year we had worked on reducing plastic waste, and likewise Eco Club always plans something, not only at the college level only, but also at society level. So wherever our students are living, we try to bring small changes in the society at individual and colony level. So you'll see that a lot of changes have been brought in their own residential atmospheres also, not only in the college. So with this current scheme of events where we are holding webinars, online webinars, and we are restricted to our homes and maybe our societies. So I request all the members to please note down the important points, whatever you learn today in the webinar. Please try to activate in your own field, in your own residential colonies, in your home, and these small steps will bring a big change towards
saving our environment from pollution and from garbage and from other waste that is generated and which harms the environment. So with these words, I would request Dr. Anurag Pandey also to please aware us, aware the young generation about the Constitutional Day and the constitutional rights and duties towards environment also. Welcome, Dr. Anurag, and over to you. First, Ashu will tell us something basic briefing on the constitutional rights. Eco Club has prepared something for you. So over to Ashu, and then Ashu will um, invite Dr. Anurag for further lecture. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And before we move ahead with our debate competition, we have our presentation team ready to give a presentation on constitutional rights. Now, I will be handing over the stage to Ashima, and and then I will be sharing a PPT. I would request everyone to please be attentive during this presentation because further ahead we have planned a quiz which will be very beneficial for you. Am I audible? Yes, Ashima. Okay. Good afternoon to all present here. As Ma'am and Oshu already have told that Constitution was adopted on 26th of November 1949 and it came into effect on 26th January 1950, with which our country became an democratic republic nation. Constitution was made to govern the country in an organized and just manner. Indian Constitution provides its citizen with some fundamental rights as well as duties. It was borrowed by USA and it was 7 initially, but now there are only 6 rights. The seventh right, that is the right of property, has been abolished. These rights can be prerogative or a duty, a power or the restraint of power. These are recognized by the state and established by the state for the welfare of people of the country. Rights are the supreme law of land. These are the protection and liberties guaranteed to the people by the Constitution. These rights ensure promotion of human dignity as well as equality. So now let's begin with the rights we have in our country. Constitutional rights or fundamental rights are incorporated from Article 12 to 35 in the third chapter of Indian constitutional rights are the basic facilities which we need for our growth. These are the claims of individual recognized by the society and then enforced by the state. The existence of democracy can't be imagined without fundamental rights in India because rights are the pillars of democracy. Then the first right we have is the right to equality. This is the principal foundation of all rights, liberties, and guarantees, which includes equality before law, Article 14, which provides that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Another provision is prohibition of discrimination under Article 15. Another is equality of opportunity under Article 16, abolition of untouchability under Article 17, and abolition of titles under Article 18. These are the provisions under right to equality which are incorporated from Article 14 to 18. The next right we have is right to freedom. These provisions are incorporated in Article 19 to 22, in which first is freedom of speech and expression under Article 19, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of the country, freedom to reside and settle in any part of the territory of country, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. Another provision is protection in respect of conviction
of an offence under Article 20, protection of life and personal liberty under Article 21, right to education under Article 21A, which was recently added in 2009 as a right in which children from age 6 to 14 are provided with the education as a basic right, and no one can detain a child from getting admission or to pursue his elementary education. The next is protection against arrest and detention against certain cases under Article 22. Rivers like Ganga and Yamuna have rights to be protected against pollution caused by humans under this constitution or the fundamental rights. The next right we have is right against exploitation. This right has several provisions which are incorporated in the Constitution under Article 23 and 24, which provides for two provisions, namely the abolition of trafficking in human beings and beggar, that is a forced labor, and the abolition of employment of children before age of 14 years in dangerous jobs like factories, mines, etc. Child labor is considered a gross violation of the spirit and provisions of the Constitution. Begar practiced in past by landlords has been declared a crime and it is punishable by law. Human trafficking for the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by the law. The next right we have is right to freedom of religion, which makes our country secular, and the provisions are incorporated under Article 25 to 28. The main objective of this right is to sustain the principle of secularism in the country, and the provisions are freedom to profess and propagate any religion under Article 25, freedom to manage religious affairs under Article 26, freedom not to pay taxes for promotion of any particular religion under Article 27, no religious instructions in government educational institutions under Article 28(1), and in private educational institutions, religious education not against the will under Article 28(3). The next right we have is the cultural and educational rights, that is 29th to 30th article in the Constitution. The Constitution guarantees every single citizen of the country both rights to education and cultures. The Constitution also provides special measures to protect the rights of minorities. Any community has the right to set up their own educational institutions to preserve and develop their culture. The provisions under the right are protection against interest of minorities under Article 29(1), freedom to get admission in educational institutions under Article 29(2), right to minorities to establish educational institutions under Article 31, and no discrimination while giving grants under Article 32. And the last and the most important right we have is right to constitutional remedies. This is the zeal or soul of Indian Constitution. This allows a citizen to move to court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Article 32 is also called citizens' right to protect and defend the Constitution, as it can be used by the citizens to enforce the Constitution through the judiciary. Dr. Bhim Rao Ambedkar declared the right to constitutional remedies as the heart and soul of Indian Constitution. When a nation or state emergency is declared, this right is suspended by the government for a while. The right to constitutional remedies is present for enforcement of fundamental rights, and this is incorporated under Article 32 to 35. This is the most important right we have. These are some rights we must be aware of. But now comes environmental law in India, as we are celebrating this under EcoClub.
So we have some things to say about environmental law in India. In India, there are multiple legislations for the protection of the environment under Article 21, that is the Forest Conservation Act 1980, the Wildlife Protection Act 1972, the National Green Tribunal Act 2010, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Now comes what are the responsibility of a person as the citizen of the country and the citizen of the world. So the act also includes the responsibilities of a person or a corporation. They have the responsibility to follow the rules made by Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per section 9 of the act. If the discharge of pollutants is in excess of the prescribed standards, the person has the duty to mitigate the damage as much as possible and also to inform the relevant authority about the breach of the rules. Thank you so much for listening with so much patience. Now over to you, Ashu. Thank you so much, Ashima. It was a wonderful presentation. Now, I would like to hand over the stage to Anukriti, where she will be organizing a quiz. Anukriti, over to you. Hello, everybody. Anukriti this side. So, we have organized a fun short live quiz to summarize what we learned today as well as to make this event more interactive. So, I just sent a link in the chat box. You just have to click on the link and type your name. Automatically, the quiz will start. So, there are some rules I want to tell about the quiz. There will be only 5 questions related to everything we discussed today. Please note, the faster you answer the question correctly, the more are the chances of you becoming a winner. I request all the teachers to participate in that too. And the winner of this quiz will get an e certificate and a special mention on our Instagram page. So let's start. And has everybody joined? Yes, Anukriti. Let some others join too. People are coming. Some more people are coming. Okay, let's start now. How many fundamental rights are recognized by the Indian Constitution? So you have 15 seconds to answer. 6. You don't have to answer here. Open the link and answer in that. Okay, so I see Sulabh to be the fastest. Let's move on to the next question. Fundamental rights are incorporated from which article range?
You have 15 seconds to answer. Time's up. Answer was Article 12 to 35. This time I see Raghav at the top of the leaderboard. Let's move on to the next question. Right to free water and free air from pollution comes under which article? You have 15 seconds to answer. Answer was Article 21. I see Pratiksha on the top of the leaderboard. Let's move on to the next question. Right to Education Act comes under which article? Okay, so time's up. The answer is Article 21A. I see Raghav again on the top of the leaderboard. Congrats, Raghav. Now let's move on to the next question. Now, this is the last question. When is Constitution Day celebrated? This one's pretty easy question. So you have 15 seconds to answer. Time's up. And the answer is 26 November. Congratulations, Raghav Maheshwari. You have won the quiz. You answered the most questions. You will be getting an e-certificate and a special mention on our Instagram page. Thank you everybody for participating, and over to you, Tanya, for our debate competition and speech. Tanya, your mic is switched off. Okay. Thanks, Anukriti, for introducing me, and congratulations, Raghav. And it was such a wonderful quiz. Now, next up, we have our special invitee, Dr. Anurag Pandey. So, it is a great honor for me to introduce and welcome you, Dr. Anurag, sir. Sir has pursued his master's in political science from University of Delhi. He did his MPhil as well as PhD in the field of political science from GNU. He is also an accomplished editor,
being a part of multiple prestigious organizations like American Political Science Association, American Society of Public Administration. He is a member of editorial board of Political Science publication. He has performed stage open in many countries like Singapore, USA, and United Kingdom. He's really soft spoken to his students and always goes beyond the call of duty for them. So, well, hats off to you. The feathers in the cap will go on and on. We are glad to have you with us today, and we are extremely grateful that you provided us with your valuable time in this super busy schedule. Sir, please enlighten with us with your words of wisdom. Over to you, sir. Wait a minute, sir. Your mic is on mute. Yeah, good afternoon, everyone. And thank you very much, Tanya. I'm really grateful to all of you, the organizing committee of EcoClub, Dyal Singh College. And I'm really grateful and thankful to Harleen ma'am and all the participants here, students. And I wish them uh, you know, good health in this time of pandemic. See, there is minor editing I want to add here because I did my PhD from University of Delhi, and this is Sage publication. I am the editor of Sage publication of USA, UK, and Singapore. So these are minor things, and it hardly matters. Um, I'm really, again, very much thankful to all the members of the organizing committee, Harleen ma'am, for providing me this opportunity to be, the part of this wonderful event. I have heard so many students speaking, and all of them are really wonderful. And the quiz competition and the way student presented themselves, it is really very good, and I find it really very interesting here. And as we know, all of know that we are celebrating today 71st Constitution Day, and our constitution starts with the preamble. And the preamble clearly writes, we the people. Now, here we means all the citizen of India, irrespective of their caste, their religion, their region, their language, gender, and so on and so forth. Now, in that sense, our constitution is very inclusive, highly inclusive in nature, and it does not exclude anyone, any community. This is also, regarded as the modern constitution. Our forefathers framed this constitution. They made it highly modern, and our constitution wants to make our state and society modern as well in our various orientation and in our various day-to-day life and so on and so forth. As I have heard from if I'm not wrong, um, Asma, her name was Ashima, about rights, and so many students also uh, presented their views about constitution very slightly. See, it is really very interesting to know that no, our constitution ensures that no rights, liberty, equality, justice, and so on and so forth must be ensured to all the citizen of India without any discrimination on any ground. And therefore you can say that constitution ensures a dignified life and overall development of over every citizen of India. The aim of our constitution goes beyond the traditional definition of rights, liberty, equality, justice, and so on and so forth. And because our constitution is flexible in nature, it always redefines the meaning of various concepts according to time and need or requirement.
and it always tries, to meet the new development. Environment is among such new developments. When our, constitution was drafted, it did not contain any specific provision on environment, and even the word environment did not find a place in the constitution while it was being framed. There is no doubt that there are certain provisions in our constitution which, to a great extent, had direct bearing on the environment. For example, improvement of public health, Article 47, organization of agriculture and, animal husbandry on modern and scientific lines, and protection of natural, monuments from uh, spoliation, you know, for destruction and so on and so forth. This is Article 49. We can say that I'm just, this is my last, paragraph. I'm just trying to conclude my speech here, that Article 47 of the Constitution may be considered to be more important. It imposes the primary duty of the state to provide public with improved health, raised level of nutrition, and ultimately improved standard of living. Now, public health can be assured to public only by offering, the safe and protected environment to live in. And this safe and protected environment is our fundamental right. Now, in 1972, there was a conference on human environment at Stockholm. Mrs. Indira Gandhi was, there as an Indian representative, and she voiced very deep concern about the degradation of the environment and eco imbalances. She also emphasized that pollution and poverty are interrelated problems, and there must be an integrated approach to deal with such issues. India was also one of the signatories of this Stockholm Declaration, which is known as Magna Carta of, human environment concerns and, for human environment protection. It is entirely based upon the Stockholm Conference. And while coming back to India, Mrs. Gandhi passed the 42nd Amendment to the Constitution in the year 1976 and incorporated especially two articles which are directly related to the protection and improvement of environment, where in the Constitution of India, obligates the state as well as citizens to protect and improve the environment of, uh, our country. So this is a brief history of our, constitution and its relation with environment. Now we are seeing various Swachh Bharat Abhiyan, and river cleaning movements and so on and so forth. We have achieved something, and we have to achieve bit more, and we are lying in between of this thing. You can see the environment degradation day by day, and the government measures how to protect environment. So this is my take on environment vis-a-vis constitution. Now I'm stopping here, and again thank you all for listening me. Thank you, Arlene ma'am, and thank you the organizing committee for providing me this opportunity to speak on constitution and environment. Thank you, Tanya. So it was superb to have you here. Like we are completely enlightened by your words. So let's move on to the star of the show, debate competition. Ashu, please change the slide. Yeah. Hello, debaters. How are you? Like doing well? You have prepared well. You all are winners for us because you have no been selected from the prelims. Now it's the final round. Show us what you got.
And the rules and regulations of debate are concerned and given here. So, the topic of the debate today is: this House believes that economic liberalization has threatened India's environment and natural resources. यह सदन मानता है कि आर्थिक उदारीकरण भारत के प्राकृतिक संसाधन वातावरण के लिए एक खतरा है. Please note that this will be only considered in Indian context. Secondly, all the participants will be given 4 minutes to present their arguments. Since it's a turn-code debate format, for 2 minutes you have to speak for the motion, then turn the code and speak against the motion for the next 2 minutes. See, a warning bell will be given to you at the end of 3 minutes, 30 seconds, and a final bell at the end of 4 minutes. So you will have to stop your speech at the same time or your marks will be deducted. All the participants will be allocated slots that you have been allocated. We have distributed your slots already. And then you can place your facts in front of everyone throughout the competition. All right. Participants are expected to use their slot number. It's okay if you haven't changed, but make sure you are present here. Only when you are directed, you can turn on your mic and video. Otherwise, others may face trouble due to network issue and bandwidth issues. All right. Participants may speak in Hindi or English. It's a bilingual debate, but you must remain committed to only one language. So it would be completely inappropriate to use any kind of language that hurts anyone's sentiments, feelings. So you should not do so. Use any kind of hurtful language. Participants will be evaluated on the basis of their content, delivery of the speech, and their defense. So the judgment of the judges will be final and binding. So first up, we have slot 1. Slot 1, Anurag Kumar from Hansraj College. Are you here? It's Sankit Kumar. All right, all right. So, are you ready? Yes, I am ready. Ashu, you can stop presenting the screen. Okay. Okay, good. So, is your video on? Yes. Yes. Slot number 1, you can proceed with your arguments. The timer has started. Thank you. सभी को नमस्कार. तो पहले मैं पक्ष में बोलना चाहूँगा. तो पहले मैं ये जानना चाहिए कि आर्थिक उदारीकरण एक मनुष्य केंद्रित विषय है जिससे प्रकृति पर खतरा आना स्वाभाविक ही है. जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि भारत का संविधान में लिखा है हम भारत के लोग. अगर उसमें लिखा है हम भारत के लोग, उस लोग में जानवर या हमारे पेड़ इत्यादि वगैरह ये सब नहीं है, सिर्फ लोग. तो इसलिए ये जो हमारा आर्थिक उदारीकरण का विषय है ये केवल मनुष्य के लिए है. इसमें समाज के इसमें प्रकृति के बाकी अंग इसमें नहीं आते हैं. तो ये इससे प्रकृति पर खतरा आना स्वाभाविक ही है. प्रकृति से ज्यादा पाने के चाह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वातावरण को नुकसान पहुंचता है. मनुष्य की सोच ज्यादा से ज्यादा पाने की होती है. आर्थिक उदारीकरण उसी विषय को सफल बनाने में हमारा सहायता करता है. इसलिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है जिससे कि प्रकृति पर खतरा मंडराने लगता है. जैसे कि हम जानते हैं आर्य जंगल का केस जो अभी हुआ था, उसमें हमें पता चला कि एक कार शेड बनाने के लिए हमने काफी वृक्षों के बलि दे दी. केदारनाथ का हादसा भी हमें यही बताता है. इतिहास गवाह है कि बिना प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए हुए भी मनुष्य इतने समय से रह पा रहा है. तो अब हमें क्या दिक्कत आ रही है कि हम वैसे नहीं रह सकते. निजी कंपनियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है जो कि है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना. अगर वह उस मुनाफे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, उसमें पेड़, वातावरण, प्रदूषण, वो किसी की भी परवाह नहीं करती क्योंकि उनका मकसद केवल मुनाफा कमाना है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण वातावरण के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है. अब मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूंगा. पेड़ों को काटना, जानवरों को बेवजह मारना, हवा व जल को प्रदूषित करना अवश्य ही गलत है.
परंतु क्या गरीबी, भुखमरी या बेरोजगारी हमारी समस्याएं नहीं है? अमेरिका व पश्चिम यूरोपीय देशों में ये समझ आता है अगर वह ये उठाते हैं कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वो विकसित है, उनको उनके मानव संसाधन उनके विकसित है, तो उनके लिए हम ये बात समझ सकते हैं। परंतु भारत जैसे विकसित विकासशील देशों में क्या हमें पहले मनुष्य को पहले नहीं रखना चाहिए? प्रकृति के सुधार हम बाद में भी सोच सकते हैं अगर मनुष्य ही सफल नहीं होगा तो। और दूसरा ये है कि ये जो आर्थिक उदारीकरण है ये ज्यादातर शहरी इलाकों तक सीमित रहता है। अगर ये शहरी इलाकों तक सीमित है तो ज्यादातर जो हमारे वन हैं और जो हमारे जानवर हैं ये सब ज्यादातर गांव के इलाकों में हमें दिखते हैं या उस जगह दिखते हैं। तो जब शहरों में विकास हो रहा है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे। और दूसरी ये बात बताना चाहूंगा कि निजी कंपनियां जो अपना रॉ मटेरियल कच्चा माल है वह भी प्रकृति से ही पाती हैं, लेकिन अगर वह प्रकृति को नष्ट करेंगी तो उनका रॉ मटेरियल जो है वो भी खतरे में होगा। इसलिए वह खुद ही इसमें चिंतित रहती हैं कि इस रॉ मटेरियल को वह संभाल के रखे और प्रकृति का सही से इस्तेमाल करें। और दूसरा ये भी आता है कि बहुत सारे व्यापार प्रकृति के क्षेत्र में भी काम करते हैं, जैसे कि पर्यटन, एडवेंचर ट्रिप्स, साइट सीइंग इत्यादि। तो यह सब प्रकृति के रक्षण के पक्ष में है। तो हमें ये कहना उचित नहीं होगा कि ये सब प्रकृति को नष्ट करने के लिए ही सारी निजी कंपनियां काम करती हैं। तो और अगर कर भी लें तो जो हमारे कानून है और जो मानव संरक्षक हैं वह इसको रोक लेते हैं। तो ये कहना उचित है कि आर्थिक जगत का प्रकृति प्रभाव उतना ही है जितना कि होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित कुमार, आपने काफी सही तरीके से हमें बताया। सो आई रिक्वेस्ट स्लॉट नंबर 2, अभ्यंकर शुक्ला, आर यू हियर इन द मीटिंग? मैम आशा करता हूँ आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है। ऑडियो ऑडियो इज वीडियो अ दोनों बिट, क्लियर है ना? थोड़ा सा बीच में है डिस्टर्बेंस। ओके मैम, जस्ट अ मिनट। hope it is better now. Yes, Abhyankar. Yes, you Much can better. proceed. हाँ जी। Much better. Clear enough? Okay, we can start. सदन की गर्मों को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया आज का विषय है कि सदन का मत है कि आर्थिक उदारीकरण भारतीय वातावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा है। तो महोदय, अन्य सभी सामान्य जो शब्द है वो सामान्य अर्थ वाले हैं, परंतु आर्थिक उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। आर्थिक उदारीकरण अर्थात बाजार का जो संपूर्ण नियंत्रण है वो राज्य से, सरकार से लेकर के स्वयं बाजार के हाथ में सौंप देना। मतलब कहीं ना कहीं बाजार का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साम्यवाद या समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का रास्ता है, जो कि आर्थिक उदारीकरण वास्तविकता में होता है। अब जब पूंजीवाद की तरफ आप बढ़ते हैं तो पूंजीवाद का उद्देश्य है व्यक्तिगत हित, और व्यक्तिगत हित मतलब आप समाज की वहां चिंता नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो उपयुक्त मार्ग चुना गया है, ऐसा नहीं कि यही एक मार्ग है, पर जो चुना गया है मनुष्यों द्वारा वो ये है कि अपने से निचले वर्ग का शोषण करके और संसाधनों का अनियमित दोहन करके आप आगे बढ़िए। तो जब आप निचले वर्ग का शोषण करते हैं और संसाधनों को दोहन करते हैं, क्योंकि ये मार्ग आपने चुना है, वास्तविकता में ये निर्धारित, ये कहीं स्पष्ट नहीं है, ये चुना है, तो ऐसी स्थिति में आप ये चिंता नहीं करते कि हमारे आसपास के, क्यों? क्योंकि आपके पास में पूंजी है, आपका व्यक्तिगत हित पूर्ण हो रहा है, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, जब आप गरीबों का शोषण करते हैं तो उनके पास जो संसाधन थे वो भी आपने छीन लिए। तो अगर वो चाहे भी कि लकड़ी जलाने की बजाय खाना बनाने के लिए हम गैस चूल्हे का इस्तेमाल करें, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उनको शोषण कर दिया है वहां पे।
तो पूंजीवाद के लिए जो तरीका अपनाया जाता है या जो आर्थिक उदारीकरण में जो मार्ग उपयुक्त है, उसकी वजह से गरीबों को शोषण होता है और गरीबों को शोषण की वजह से वो चाह कर भी ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का या प्रकृति या भारत के वातावरण का उपयोग का जो ह्रास हो रहा है वो ना हो। और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि पहले से ही आर्थिक विभाजन का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जब आप शोषण करते हैं तो वो जो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है, और इसी वजह से जो भारत का वातावरण है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि गरीब चाहकर भी किसी दूसरे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, और जो पूंजीवादी व्यक्ति है उसको जरूरत ही नहीं महसूस होती कि वो किसी दूसरे संसाधन का उपयोग करे जिससे वातावरण बचा रहे। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो देखिए महोदय, दिक्कत आर्थिक उदारीकरण में नहीं है, दिक्कत उसमें है जो मार्ग चुना गया है। और जब मनुष्य ये मान के बैठ जाता है कि इसके अतिरिक्त कोई द्वितीय मार्ग हो ही नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है जब आप ये मान के बैठ जाते हैं कि यही एकमात्र मार्ग है जिससे आपका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। देखिए, पूंजीवाद का उद्देश्य है व्यक्तिगत हित, प्रतिस्पर्धा करना उद्देश्य है, परंतु प्रतिस्पर्धा की बजाय यदि आप युद्ध करने को बैठ जाएंगे, आपको कक्षा में भी सिखाया जाता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देनी है, आपको फर्स्ट आना है क्लास में, पर कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है कक्षा में कि दूसरों की कॉपी किताबें फाड़ के फेंक दो, या दूसरे अगर किसी कलम से लिख रहे हैं तो उनका कलम तोड़ के फेंक दो, वो नहीं सिखाया जाता है। तो वहां पे भी प्रतिस्पर्धा होती है। अब प्रतिस्पर्धा को युद्ध में मानव जाति ने परिवर्तित किया है। वास्तविकता में आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य निर्धारित था, इसके लिए कई अन्य माध्यम भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करिए, आप अपना व्यक्तिगत काम करिए, परंतु आप उसमें अगर ऐसी चीजें लाएंगे जानबूझकर जिसमें आप आसपास के समाज का आप चिंता न करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं सोच रहे हैं अन्य समाज के बारे में, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप वहां पे ह्रास कर रहे हैं उस समाज का। दिक्कत इस प्रक्रिया में है, इस प्रक्रिया को ही एकमात्र प्रक्रिया मान लिया गया है कि हाँ यही मात्र संभव है। दूसरी बात, बहुत पुराने समय से ही भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जाता रहा है, और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया गया है। तो भारत में जो समस्या है वो विशेषता ये है कि सतत पोषणीय विकास के जो नए नए इन्वेंशन, जो नए नए आविष्कार करे जाते हैं, उनको वास्तविकता में पहचान नहीं मिलती है, सरकार के तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री उनको वास्तविकता में सहारा दे सकती है आगे वृद्धि करने के लिए, वहां तक वो तरीके पहुंच नहीं पाते। समस्या कदापि इसमें नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण गलत है, वो तो संपूर्ण बाजार के हित में है, क्योंकि बाजार का नियंत्रण बाजार के हाथ में दिया गया है। दिक्कत तरीके में। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद अभियंकर। हमारे स्लॉट 3 के पार्टिसिपेंट हैं विकास त्रिपाठी। Am I audible? Yes. विकास, आर यू देयर इन द मीटिंग? क्या मैं 2 मिनट हाँ पे जी, एक हाँ जी। बेल मिल सकती है मुझे? एक नोटिफिकेशन आप दे दीजिएगा चैट में। Actually, I don't have a Yeah, system yeah, of bell, but I just can write it in the write chat it in the box. chat box. That will be fine now, Okay, because okay. No, it no, will no, create it's a little all bit of right. noise with bell. So so that your speech is not interrupted, that's why I'm writing in the Write it chat in the box. chat box on 2 minutes. Okay, thank you. Okay, So superb. मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। इस सदन की गरिमा को मेरा सादर प्रणाम। सदन का विषय है कि क्या आर्थिक उदारीकरण भारत के पर्यावरण और वातावरण के लिए खतरा है, प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण के लिए खतरा है। इस विषय के जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उदारीकरण क्या है। पहले मैं के पक्ष में बोलूंगा। उदारीकरण वह व्यवस्था है जिसके तहत हम बाजार को सरकार के नियंत्रण से प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण की तरफ ले जाते हैं। इस नियंत्रण के ट्रांसफर के दौरान एक प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, एक कंपटीशन बढ़ता है। इस कंपटीशन के चक्कर में कंपनियां एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में अपने सर्विसेज को, अपने सामानों को, अपनी सेवाओं को सस्ते से सस्ता बनाने के लिए प्रकृति पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि उनके जो कच्चा माल है वो प्रकृति की ओर से आता है, और प्रकृति से लाने के लिए प्रकृति का वो दोहन करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं, कच्चे माल को ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करती हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा होता है। और जब जब प्राइवेट कंपनियां बढ़ेंगी तो हमें यह कंफर्म है कि यह निश्चित है कि प्रकृति का दोहन होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। इस कार्य को करने के लिए दो तरीके से काम करती हैं। पहला,
वो लोगों में किसी सामान को खरीदने की उत्सुकता बढ़ाती है, लोगों को कंज्यूमर बनाती है, लोगों को उपभोक्ता बनाती है, उपभोक्ता बनाकर वो लोगों से उन सामानों को भी खरीदवाती है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, जिसके चक्कर में जो कचरा है, कूड़ा है, वो बढ़ता है। लोगों को जरूरत नहीं है तो वो जरूरी उसे डस्टबिन में फेंक देंगे, वो दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाता, वो एक जगह इकट्ठा होता है और हमारे प्रकृति को खराब करता है। दूसरा तरीका है, जब मांग बढ़ती है तो जरूरी ही है कि कंपनी वाले अपने फायदे के लिए और सामान बनाएंगे, और इस सामान को बनाने में वो प्रकृति से कच्चा माल लेते हैं और उस स्तर पर लेते हैं जिसमें कि प्रकृति वो दे न सके, प्रकृति को इससे नुकसान होता है। जैसा कि हमने लॉकडाउन में भी देखा, जब लोगों की मांग कम थी, लेकिन फिर भी जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है, सीबी की रिपोर्ट आती है कि नदियों का जो पानी है, नदियों का जो कुछ नदियों का जो जल स्तर है वो और खराब हो गया है, जैसे गंगा का, यमुना का जल स्तर जो है वो और खराब हो गया है। तो उसका कारण क्या है कि जो कंज्यूमरिज्म है, जो उपभोक्तावाद है, वो और बढ़ रहा है, और उदारीकरण इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने उपभोक्तावाद को बढ़ा दिया है। कंपनियां अब बिना मांग की चीजें उठा रही हैं। अब मैं इसके पक्ष में बोलने चाहूंगा तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण ने भले ही उपभोक्तावाद को बढ़ाया है, प्रतिद्वंदिता को बढ़ाया है, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि आप पर्यावरण के लिए अपने नियम ना बनाओ। तो उदारीकरण पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, यह तंत्र खतरा है, वह तंत्र खतरा है जो कि उदारीकरण को रोकता नहीं है। उदारीकरण में जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको नहीं रोकता। उदारीकरण नई तकनीकें लाता है। उदारीकरण में जब कंपनियां बहुत सारी आती हैं तो वो और ऐसी तकनीकें लेके आती हैं जो कि हमें हमारे प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाती हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा बनाती हैं। तो अगर हम उन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ाएंगे, उन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना शुरू करेंगे, तो हमारी प्रकृति को खतरा कम होगा। तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि पर्यावरण से तो खतरा है, पर्यावरण को खतरा है लिबरलाइजेशन से, लेकिन लिबरलाइजेशन अगर तंत्र सही काम करेगा तो यह खतरा कम होगा। कंक्लूड करने के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लिबरलाइजेशन पर्यावरण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा तब तक है जब तक सरकार सही से काम नहीं करती। सरकारी तंत्र जो कि अपने स्थानों पर है, अगर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो यह खतरा बिल्कुल भी कम किया जा सकता है। थैंक यू। Okay, thank you. Slot number 3, Vikas. Next up, we have Raghav Maheshwari with us. Slot number 4. Yes, ma'am. I'm starting. सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। आज मैं विषय के सर्वप्रथम पक्ष में अपने विचार रखता हूं। महोदय, आर्थिक उदारीकरण से हमारा तात्पर्य होता है विकास को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक गतिविधियों पर सरकार ने जो कठोर नियंत्रण एवं नियम लगा रखे हैं उनमें छूट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की भूगोल की पुस्तिका उठाकर देख ले तो हर पुस्तक में जो एक चीज अच्छे से परिभाषित मिलेगी वह है सतत विकास। परंतु आज हमने विकास को तो अपना लिया, परंतु जो सतत है उसको हम कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है। मतलब विकास की इस अंधी दौड़ के दो अहम पहलू हैं, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। जब विस्तार किया जाता है तो निसंदेह आवश्यकता होती है भूमि की जो अधिग्रहित की जाती है वन काटकर। महोदय, इसी आर्थिक उदारवाद का सहारा लेकर जब हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए, तब सिर्फ एक वन नष्ट नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ नष्ट होती है उस वन द्वारा बनाया गया जलवायु में संतुलन, वन्य जीव जंतु एवं वन में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन। इसके अतिरिक्त महोदय, जहां अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक उदारवाद पेड़ों के लुप्त होने का कारण बन रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसी ही बेलगाम गतिविधियों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन, जल एवं वायु प्रदूषण जहां एक और पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या को जीर्ण रोगों के दलदल में धकेल रहे हैं। इससे एक और जहां प्राकृतिक संसाधन तो हमारे खतरे में है ही, बल्कि अपितु भारत जैसे देश में जहां प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवाएं तक बदहाल हैं, वहां के मानव संसाधन भी गहरे खतरे में डाले जा रहे हैं। महोदय, 2013 का साल तो आप सभी को याद होगा। महोदय, आर्थिक उदारीकरण के कारण हमने पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में आधुनिक विकास तो कर लिया, परंतु यह पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया कि जब उन घाटियों और वादियों पर हम ये अतिरिक्त भार डालेंगे और वह संभाल नहीं पाएंगी, तब उन इलाकों की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण हर क्षेत्र केदारनाथ जैसी त्रासदी को न्योता देता दिखेगा। अब विपक्ष में बोलते हुए महोदय, जहां तक बात होती है सतत विकास की, तो हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां विकास का आधारभूत स्तंभ ही सतत विकास है। और इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र ने भी 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची तैयार की, जिनमें से 6 से 8 सतत विकास लक्ष्य सीधे सीधे पर्यावरण, जलवायु संतुलन एवं संसाधनों से जुड़े हैं, जिसका पालन
भारत एक सदस्य देश होने के नाते पूरी निष्ठा से करता है। महोदय, अगर बात करते हैं कि देश विकसित भी हो जाए और संसाधनों का इस्तेमाल भी ना करना पड़े, तो यह उतना ही विरोधाभासी है जितना कि बिना किताबों को पढ़े किसी विद्यार्थी का परीक्षा में प्रथम आना। और इसी समस्या का हल निकालते हुए आर्थिक उदारवाद के चलते जो विकास होता है वह समांतर हो, उसमें अक्षय संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जो भारत जैसे देश के प्राकृतिक संसाधनों के अति उपभोग पर अंकुश लगाता है। महोदय, जब भूमि अधिग्रहण के कारण वन काटकर फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, तो निजी उद्योग तो छोड़िए जनाब, सरकार तक को पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के तौर पर वृक्षारोपण करना पड़ता है, जो अक्सर माननीय न्यायपालिका अथवा एनजीटी की कड़ी निगरानी के अंतर्गत होता है, जिसकी मिसाल चारधाम कॉरिडोर के उपरांत न्यायालय द्वारा सरकार को वृक्षारोपण करने का आदेश देना है। और महोदय, जहां तक बात है सुदूर क्षेत्रों में विकास की, तो ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में यह सड़क निर्माण इत्यादि जैसे प्राथमिक विकास और भी आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है। हाँ, वो बात अलग है यदि आप ट्रक, टैंक एवं अन्य सैन्य उपकरण घोड़े एवं खच्चरों पर लाद कर ले जाने की कोई व्यवस्था खोज लें। अंत में जब बात होती है प्रदूषण की, तो हम यह बिल्कुल नहीं भूल सकते महोदय कि आर्थिक उदारवाद कभी भी पर्यावरण एवं जलवायु से समझौता नहीं करता, और प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी एवं न्यायपालिका द्वारा सख्त रुख अख्तियार किया जाता है। और इसी आर्थिक उदारवाद देने वाली भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक अध्यादेश भी पारित किया गया, जो प्रदूषणकर्ता पर कड़ी कार्रवाई एवं भारी जुर्माने का प्रावधान रखती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, गलत आर्थिक उदारवाद नहीं है, बल्कि गलत है आर्थिक उदारवाद को जिस तरह से लोग अपना रहे हैं और नियमों को पालन करने में चोरी कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, Raghav. So, next up we have Ritu Rahar, slot number 5. Slot number 5, Miss Ritu Hello, Rahar. can you hear me? Yes, Ritu, very much audible. ओके। सदन की गरिमा में मेरा सादर नमस्कार। मैं ऋतु भौतिक विज्ञान द्वितीय वर्ष हंसराज महाविद्यालय की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा विषय क्या है। हमारा विषय है कि सदन मानता है कि आर्थिक उदारीकरण प्राकृतिक संसाधन वातावरण के लिए खतरा है। अब मैं सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण के बारे में भी बताना चाहूंगी कि क्या होता है ये। आर्थिक उदारीकरण में आर्थिक नीतियों को उदार एवं सरल बनाकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विद्यमान जटिलताओं को कम करके उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देने की रणनीति अपनाई जाती है। अब मैं इस विषय के पक्ष में बताना चाहूंगी। जैसा कि ऊपर वर्णित है, आर्थिक उदारीकरण में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है। उद्योगों को बनाने के लिए जंगल और वन काटे जाते हैं, जिससे वन्य जीवों, पेड़ पौधों और हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है और प्राकृतिक संसाधन खतरे में आ जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत उद्योगों के विकास के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण में वस्तुओं एवं सेवाओं के आगमन पर लगी बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधन वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन आदि खतरे में आ जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक तो बनेगी, किंतु विदेशी पूंजी पर आश्रितता, विदेशी उपनिवेशवाद की स्थापना एवं वृहद औद्योगिक वर्गों का समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी तथा प्राकृतिक संसाधनों की कमी का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। अब मैं इस विषय के विपक्ष में बताना चाहूंगी। नई आर्थिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक उदारीकरण। नीति की विशेषता निजी क्षेत्र के विनिमय और नियंत्रण में ढील देने से संबंधित है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश का विकास ही होगा, न कि हानि। इसके साथ ही सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों और वनों और जंगलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध किए गए हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि आर्थिक उदारीकरण हमारे लिए अच्छा है, इसे देश में लागू करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, जिस तरीके से इसके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर लापरवाही बरती जा रही है, वो तरीका गलत है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद ऋतु। हमारे नेक्स्ट स्लॉट पार्टिसिपेंट लिस्ट में है निधि शर्मा। Can you hear me?
Yes, Nidhi, you are audible. Okay, so shall I start? Yes, sure. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सबसे पहले विषय के तर्क में अपना पक्ष रखना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि आर्थिक उदारीकरण के चलते न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के मन में प्रकृति के लिए संवेदना घट चुकी है। हम प्रकृति का महत्व भूल चुके हैं। आज जिन जंगलों को काट कर हम शहर बसाते जा रहे हैं, उद्योग बनाते जा रहे हैं, कल को जब इन्हीं जंगलों का नामो निशान नहीं रहेगा, तब यही मनुष्य सांस ना ले पाने के कारण, प्रदूषित वातावरण में जीने के कारण, बीमारियों से ना लड़ पाने के कारण तिल तिल कर मरेंगे। पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य तीनों एक ही समाज, एक ही पर्यावरण का भाग हैं। इनमें से अगर एक भी भाग को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और ऐसा नुकसान पहुंचता है कि उसके अस्तित्व पर ही बन आए, तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मानव गतिविधियों के कारण पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और अनेक प्रजातियां तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं। अमेज़न वर्षावन, जो कि पूरे विश्व में 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, पिछले 50 वर्षों में उसकी जमीन को पशुपालन के लिए उपयोग किए जाने के कारण हम उसका 20% हिस्सा पहले ही खो चुके हैं और अब भी हर मिनट हम उसकी 150 एकड़ भूमि उद्योग के हाथों खो रहे हैं। और यही अगर हम केवल भारत के बारे में बात करें तो बड़े पैमाने पर जंगलों को काट दिए जाने के कारण अब पूरे देश में शेरों की संख्या केवल 674 ही रह गई है, जो कि मनुष्य और बाकी बड़े जानवरों के मुकाबले बेहद कम है। प्लास्टिक, जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नदियों, झीलों, समुद्रों में जाकर उसके ढेरों को लाद दिया जाता है, जिससे समुद्री जीव दम घुट जाने के कारण मर जाते हैं। ये बात सच है कि मानव समाज की तरक्की के लिए औद्योगिकरण, वाहन, मशीनें आदि सब बेहद आवश्यक हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जान है तो जहान है। जब मनुष्य स्वस्थ ही नहीं रह पाएगा, तब ऐसी तरक्की किस काम आएगी? तब ये तरक्की मानव समाज पर केवल एक कलंक मात्र बनकर रह जाएगी। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने तर्क रखना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की आर्थिक उदारीकरण के लिए उदारीकरण बहुत आवश्यक है। अगर आसान भाषा में कहें तो उदारीकरण कुछ नहीं है, केवल व्यापारिकता को आसान बनाने का एक माध्यम है। हाँ, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि इससे प्रकृति पर कुछ हद तक असर पड़ता है, पर उसे सुधारने के लिए सरकार को आवश्यकता है केवल बेहतर नियम और नीतियां बनाने की, जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। पर उसे और ऐसा कदाचित नहीं होना चाहिए कि एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करने के लिए दूसरी तरफ हम मानव समाज के विकास को ही रोक दें, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो एक तरफ अमेरिका, जहां मिल्की वे आकाश गंगा के भी पार जाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत 14वीं-15वीं शताब्दी के दौर में पहुंच जाएगा। इस समय भारत के लिए आवश्यकता है कि वह बड़े बड़ी कंपनीज को हमारे देश में निवेश करने का मौका दे, और अगर आर्थिक उदारीकरण नहीं होगी तो ये नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारे देश की कंपनीज को भी बड़े बड़े देश अपने देशों में निवेश करने का मौका नहीं देंगे। इससे हमारे भारत का विकास नहीं हो पाएगा और इंडियन रुपी की कीमत मार्केट में घट जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो वीकेंड्स पर अपने फेवरेट डोमिनोज पिज्जा खाना भूल जाइए और आलू पराठा खाने की आदत डाल लीजिए। अगर भारत एक विकसित देश नहीं बन पाएगा तो बड़े बड़े और विकसित देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, रशिया आदि जैसे बड़े देश हमारे हर छोटे बड़े फैसले में दखल देंगे। क्या हम अपने देश की ऐसी स्थिति देख पाएंगे? इस कारण से कुछ वर्षों के लिए प्रकृति की चिंता को एक ओर रखते हुए हमें पहले भारत की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। एक बार भारत विकसित देशों में आ जाए, फिर प्रकृति के हुए नुकसान को बहाल करने के तरीके खोज लिए जा सकते हैं और खोज ही लिए जाएंगे। इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो विकसित देश आज हैं, उन्होंने भी प्रकृति को दांव पर रखकर ही अपने देश का विकास किया है, और इसी का नतीजा है कि आज ये देश प्राकृतिक और आर्थिक दोनों ही रूप से भारत से बेहतर है। इसी प्रकार जनता और सरकार के सहयोग से एक दिन भारत भी इन्हीं चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद निधि। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं स्लॉट नंबर 7। स्लॉट नंबर 7 मिस प्रीति सरफ। हाँ जी प्रीति, आप विजिबल हैं। Audible also? Audible, very much. Okay. So please start my time. Okay, started.
Okay, you can continue. तो सदन में उपस्थित सभी निर्णायक मंडल को एवं सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं प्रीति सराफ आज आपके समक्ष सदन पटल पर रखे हुए विषय आर्थिक उदारीकरण, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण के लिए खतरा है के के पक्ष में प्रथम अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ। तो विषय की गहनता को समझने से पहले हम सबसे पहले विषय के शब्द पूंजी पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आर्थिक उदारीकरण की। आर्थिक उदारीकरण एक ऐसा कदम है जिसने 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 अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर निजी निजी जिसने सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजारी प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाता है। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन। कोई भी वस्तु जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हो तथा उसे आवश्यकता की पूरी कर सकता हो संसाधन कहलाता है। और जब ये संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तब हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद बात आती है पर्यावरण की या वातावरण की। तो वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने मनुष्य को जीवन काल से ही प्रभावित किया है। तो जो हम सब जानते हैं कि मानव ने प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का सहारा लिया है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद स्थिति कुछ अलग ही नजर आई है। आज आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार एवं विकास को लाना है। तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग किया गया है, जिसके कारण आज आज इन पर खतरा मंडरा रहा है। आज जब प्राकृतिक संसाधनों की मांग ज्यादा होने लगती है और उनकी उपलब्धि कम हो जाती है, तब इन प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा मंडराने लगता है। उसी के साथ औद्योगिकरण की प्रतिक्रिया के बाद नए नए भारी उद्योगों की स्थापना हुई है जो प्रकृति को तहस नहस करने में जुट रखे हैं। संसाधनों का बेरुख उपभोग के साथ ही उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों की उत्सर्जना की जा रही है, जिसके कारण वातावरण को हानि पहुंच रही है, उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। शायद यही कारण है कि आज हमें प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, कच्चे माल के लिए धरती के गर्भ में सालों से सुरक्षित खनिज पदार्थों को निकाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अब हमारे जो संसाधन है, जो हमारा वातावरण है, उसके संतुलन को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन जब हम आर्थिक उदारीकरण की दृष्टि से देखें तो आज आर्थिक उदारीकरण विकास की दृष्टि से उठाया गया कदम है। तो अगर हम इस विषय की जड़ में सोचकर विचार करें तो ये पता चलता है कि खोट आर्थिक उदारीकरण में नहीं, खोट तो मानव की सोच में है। जैसे कि मनुष्य इस धरती पर सबसे अक्लमंद प्राणी है, वह अपनी सोच के आधार पर ही इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब मनुष्य के इसी सोच पर पत्थर पड़ जाते हैं और वह इन अपने सिर्फ स्वार्थ मात्र के लिए इन संसाधनों का उपभोग करता है, तब इन संसाधनों पर खतरा मंडराता है। वास्तविक रूप से तभी ये संसाधन खतरे में आ जाते हैं, अर्थात जब मनुष्य परिणामों की परवाह न करते हुए जिम्मेदार नागरिक की बजाय आज एक लालची मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, तब ये प्राकृतिक संसाधन खतरे में होते हैं। आज इसी का ही परिणाम यही होता है कि आज वह प्रदूषण उनका प्रभाव करता है। इसी के साथ आज बढ़ती जनसंख्या ने हर रूप से प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आज वाहनों से निकलते धुएं से लेकर पटाखों से निकलते धुएं ने हर एक ने इस संतुलन को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। इसी के साथ आज मिट्टी में दबी हर थैली से लेकर मिट्टी में मिली दवाइयों, कीटनाशकों, हर एक ने पर्यावरण के संतुलन को नुकसान पहुंचाया। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को अंत करते हुए ये बोलना चाहती हूँ कि हर जन आज एक विशेष व्यक्ति से लेकर आदमी विशेष से लेकर जन जन की भूमिका रही है। ये जो आज प्राकृतिक संसाधन व वातावरण खतरे में है, वो हम सब जिम्मेदार है उसके लिए। धन्यवाद। Okay. धन्यवाद प्रीति सरफ. Now we have slot number 8, Mr. Vishwajit Parasar. Are you there in this meeting? Vishwajit? Okay, I think slot number 8 isn't here in the meeting. So we move on to the next slot number 9. Slot number 9, नेहा झा, आप यहाँ हैं? Yes, one second. Am I audible? Yes, dear.
Wait a second. Wait a second. Could you please speak something so I can take a glance that if it is audible or not? Okay. So first of all, good afternoon, everyone. Okay, Am I okay. audible? You are audible. Yes, yes, superb. You can continue with your speech. You can start now. Okay. So, economic liberalization. First of all, what is this economic liberalization? Economic liberalization is lessening of government regulations and restrictions in economy. Before 90s, it wasn't that easy to set up any kind of business because there were so many formalities. But after this liberalization, it came as a turnaround, revolutionary turnaround for the people of India. The abolition of license, permits, quota, all these things played a major role in upgrading our market system, in upgrading our economy infrastructure, and doing so many good things for our business. But this liberalization had main focus on economy or in this marketing system, but they ignored our environment, or they just didn't give their main attention to environment. So in the favor of this, I will say that nearly 17,000 of trees were chopped off in South Delhi just for redevelopment of central government accommodations, and about two-thirds of the Gurgaon had been lost just for the encroachments and industrial projects. In 2008 to 2017, about 20,000 trees were cutted off just because to make flyovers. Flyover. Government has made this environment a political issue. They didn't give major attention towards this. The clearing of forests in Delta region and excessive use of minerals led to mineral imbalance, and excessive use of petrochemicals also led in our degradation of soil fertility and made our soil more acidic. And so many things were ignored towards our environment. Management of wastes were not done very greatly. And I was just turning against and switching against this topic. So I think it made so many good impacts on environment too. Our MNCs had done so much for environment as to fulfill their social responsibility towards environment, and our government had also launched so many schemes like MBI, market based instruments, which has more focus on environment and economic development, cost effective control pollution, and to maintain our environment good. Government follow the steps and Neha, wait so a many. second. Are you able to hear me? Neha, Yes, yes. your What network happened? is flexing, dear. Your voice is cracking in the middle. Oh, Okay, can you please start again? शुरू से मतलब नहीं 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 from नहीं, start. जहां से आपने छोड़ा है आप वहीं से शुरू कर सकती हैं. Okay. So I was just telling about the government schemes which led to which had done for environment, like MBI schemes, market-based instruments, which is the cost-effective method of which is a cost-effective method to maintain our environment good. Our government also followed strategies like command control strategies. They had made so many amendments in our acts, like 2015, just to cut down one, and if monetary companies share forest parts, if any companies, they have so many in environment. They have this environment programs and maintenance of parks and maintenance of the
and were also praised of and for confidence saying that the environment and will go hand. We can't ignore that. So and government don't contradict each other. So we don't have to ignore our environment for don't for environment. And so Okay, so am I audible, Anukriti? Yes, you are audible. So slot number 10 has cancelled because of personal reasons. So we will move on to slot number 11, Sudhanshu Shekhar Jha. Are you there in this meeting? Yes, ma'am. Okay. Slot number 11, you can continue. All right. Ma'am, if you can clarify that, am I audible and visible? Yes, you are clearly audible and visible. Uh, we have already mentioned the rules and regulations. You joined just now, na? So Yes. instead of a bell, I am writing in the chat box 30 seconds and then please conclude within that time frame. Okay? All right. Is it okay? Thank you. You can proceed. With the kind permission of the Honorable Speaker, I would like to propose the motion. This House believes that economic liberalization has threatened India's economic resources and natural resources environment. Talking in favor, we need to understand that when economic liberalization happened, basically private industries were given a chance to operate in the Indian economy. And when we see that private players actually play in this field, their primary intention is to gain profit, not basically it's concerning about the society and environment at large. That's why we see that whenever this operation happens, we see most of industries being established and they do not follow the rules and regulation that is being created by the environmental organization of that country. That's why we see that air pollution, according to World Health Organization report, 140 million in people in India is breathing the lowest quality of air, that is 10 times worse than the standard set by the World Health Organization. And it is just because of the most of the industry that has been open just because of economic liberalization. Then we say also opening up of various factory leads to water pollution because they do not catch up with proper sewage treatment, and because of which we see the environmental issues like water pollution at the same time. Then we also see that resource depletion as far as concerned in context of India. World Bank report reveals that in recent time we have the resource depletion in context of India by 1.01%, which proves the fact that when MNCs operate in India, they basically depletes the natural resources that we are having, and it is just because of the economic liberalization. And talking in against of the motion, we need to understand that since economic liberalization has happened, indeed industries have been opened, but the primary reason the environment crisis that India is facing, it is not because of these economic liberalization, it is just because of the mismanagement of the Indian administration. Because we see that air pollution, one of the major contribution to air pollution is the burning up of fossil fuels, is basically the 1 million household which are using chulas. So it is not hardly to anything with that of economic liberalization. But we need to understand that because of this economic liberalization, most of the industries have opened. We have seen creativity in terms of competition, and because of which we have some sort of environment related programs. We have solar backups, we have solar chargers, we have electronic vehicles. And recently we have this initiative lead by US Green Company, and it can be only operated in India just because we have the economic liberalization. We give them the chance to operate in our country. So in all, we need to understand that indeed factories have opened, but they've created most of the opportunities as far as environment is concerned. And whatever the problem we are facing, it is because of the mismanagement as far as India is concerned. And World Health Organization also reported that water pollution is just because of the
mismanagement as far as sewage treatment is concerned. So with this, I would like to rest my case. Thank you. Thank you. Slot number 11. That was indeed a good speech. Next up, we have slot number 12. Antisha. Is Antisha here? So Antisha is not here. So we will proceed to the next slot. Slot number 13, Muskan. Muskan, are you here? Hi, Muskan. Could you please unmute yourself? Ma'am, should I start? Yes, dear, you can proceed. Okay. Earth has enough resources to satisfy everybody's need, but not anybody's greed. A very pleasant afternoon to each one of you present here. Respected Dr. Runal Pandey sir, Dr. Haleen Nabar ma'am, it's an honor for me to share this platform with such eminent personalities like you, worthy teachers, student coordinators, and my dear friends. Today, I, Muskan Agrawal, have got the golden opportunity by the EcoClub of the esteemed College of Delhi University, Dyal Singh College, to express my views on today's topic, that is, this house believes that economic liberalization has threatened India's environment and natural resources. Before taking a microscopic look at the ground reality of our today's concerned topic, let us take a brief view of what economic liberalization is. Economic liberalization is the lesson of government regulations and restrictions in an economy in exchange for greater participation by the private entities. In short, it is the removal of controls in order to encourage economic development. With each footstep of mankind towards the ray of emerging possibilities of future success in economic developments, advancements, and victories, people are ready to exchange paper with leaves, that is, money with environment. The result is such that we are slightly losing the sources of lifetime savings for some temporary good. The actions are taken to generate foreign exchange, and according to the third law of motion, for every action, there is equal and opposite reaction. And that can be definitely seen on the environment and natural resources. The greenery shows a red signal. The water table of the groundwater is getting more grounded. The way we are exploiting our environment and natural resources, the alarm is big. For our economic benefits, we are somewhere ignoring the declining graph of the availability of natural resources. Dear, sorry to interrupt you, but you could please come to close to the speaker. Your voice is feeble. Hanji. Should I continue? Hanji. And in some time, it may even not sound strange and huge that the Third World War might take place because of water. The interstate water disputes are already in news. No doubt, economic liberalization is threatening our environment. It is also very much evident from the example of Bichli village in Rajasthan. There, within 4 months of H acid factory set up, 40 villages situated within 2 kilometers downstream from the company were polluted. Companies like Nipa, and others used to produce H acid, a dye intermediate, and dump the sludge into North Sea. Isn't it ironic? We cut trees, make paper, and write on the same paper, save trees. My dear friends, it's high time we realize the depth of the situation. Otherwise, sooner or later, we'll realize that we were busy digging our own graves. Time to turn the coin. Every coin has two sides. So let us see the other side with the same zeal and curiosity. Economic liberalization has opened several golden doors of opportunity to make Earth the green planet, along with the very own type of blue planet. As liberalization came, people got comparatively easier out to expand their business and earn better. They got more money to support NGOs and umbrella organizations working for the betterment of the health of the environment.
serve for a better tomorrow. Thank you and have a colorful day ahead. Thank you very much, Muskan. Welcome, ma'am. Okay, you can switch off your video now and mute yourself. Okay. Next up, we have slot number 14, Palak Agrawal. Are you here in this meeting? Yes, ma'am. Okay, Am I Palak. clearly audible? Anji. Very good afternoon to respected jury and all the ones present here. Today I'm here, Palak Agrawal, expressing my views on economic liberalization has threatened India's environmental and natural resources. Firstly, what economic liberalization was. Economic liberalization was introduced in 1991, which has reduced import duties and paved the way for foreign manufactured goods to flow to India and for foreign direct investment. It is posited as a set of processes that promote GDP growth, but come with threatening India's natural and environmental resources. Moving forward to the pros of the topic, economic liberalization has caused degradation of India's resources due to increased use of them by foreign industry as they only want profit, profit and profit with removal of tariffs and other types of all restrictions. Openness of India's economy brought more dirty industries to the country, which has now lax environmental resources regulations from developed countries, where these industries had to face many types of stringent rules and norms. It has increased stress on the habitat and environmental resources of the India and monetizing natural wealth, leading to the repercussions in ecology. With the liberalization, it became easy for the foreign companies to have access for fertile land for construction purposes and thus caused enormous pressure on land, led to the destruction of natural ecosystem. There is increase in pollution level. That is clear to very visible to us, like in every metro cities like Delhi, we have to face many breathing issues due to the pollution, which was rise due to the demand for infrastructure in post-liberalization period. Liberalization of economy also endangered livelihood security of the people of the country, which are dependent on racial and natural resources like the tribals and many more one. Turning the quote, I am moving to the cons of the topic. Economic liberalization has incentivized the industries to quickly move to environmentally friendly technology. For example, for many activities like power generation, our needs now met by many renewable resources like solar energy. That the techniques come to us only that will be possible due to that made us to the possible due to the economic liberalization. It has also brought about improvement in economic growth and development of the country, which has induced people to demand for clean environment. This has led to the inflow of environment efficient technologies to the India from developed countries that make producer to shift toward cleaner production technologies and techniques. Also, proceeding to the next point, I want to say that economic liberalization has brought up opening of many sectors, like many NGOs now getting foreign investment from the other countries and engaged in environment conservation related issues that help India much in for the environmental conservation. Also, there is much trade deficit in India, as we know, that is the increase in increase in import activities rather than increase in export one, that leads to the flowing of India's reserves to the other countries, which those reserves can be used in the natural and environmental conservation. Now, concluding to myself, I want to say economic liberalization leads the crux of many dilemmas in today's India, the clash of divided interest over conservation and development. Government of India must should consciously adopt strict norms and protocols regarding use of environment with development processes. The development processes should be sustainable beside opening its only economy. We should have to concern about future generation, because our development alone can only last forever. If we think about the future generation, if we have concern about them and we do sustainable development, due to enhance our current living styles without concern for posterity will deplete resource and degrade environment at a pace will
which is bound to result in both environmental and also economic crisis. We can't have to forget it because we have done economic liberalization only to improve our economic conditions. So India's growth transformation has to be green. The economy must be competitive, but as well as sustainable. Thanking you to giving me such an opportunity to convey my feelings. Thank you so much. Okay, thank you very much, Palak, for your arguments. Next up, we have Pikesh, slot number 15. मैम Please मेरी आवाज आ रही unmute है? yourself. क्या मेरी Pikesh, आवाज आ रही है? yes, you are audible, but I can see वो red mark on your video. आई थिंक नेटवर्क इशू है. Maybe there's a lag or something like that. Your timing will. Pikesh. मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, Pikesh. You can proceed. सदन की गरिमा को मेरा नमन. आज सदन पटल पर जो विषय रखा गया है वह है कि आर्थिक उदारीकरण प्राकृतिक संसाधन वातावरण के लिए एक खतरा है. अगर इसके पक्ष में बात करते हैं महोदय, तो मेरे जो पहले जो मित्र आए हैं वो उदारीकरण को पहले ही परिभाषित करते जा चुके हैं. वो उदारीकरण को कहते हैं कि जो निजी क्षेत्र का है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ आना और देश के आर्थिक विकास में सहयोग करना. हाँ, मैं इसे सही मानता हूँ, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस समय की बात देखते हैं. उस समय भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो पर्यावरण संबंधी कुछ सोच सके, ना कि औद्योगिक संबंधी. उस समय एक सार्वजनिक क्षेत्र ही था जो इस सब को सोच सकता था. लेकिन जब 1991 में आर्थिक नीति आई, उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में बताया गया. यहीं से निकलता है उदारीकरण. उदारीकरण में हम निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के उन भागों में जाने की अनुमति देते हैं जहां सरकार पहले से रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है, अर्थात जैसे सीमा रक्षा के क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये सब की बातें. लेकिन आज जो निजी क्षेत्र है अपनी सीमा को भूल चुका है. निजी क्षेत्र क्या करता है? निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है. वहां क्षेत्र करता है. उन्हें उनसे आर्थिक विकास होना चाहिए. तो आर्थिक विकास के लिए यदि पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती हैं तो सरकार से क्लियरेंस ले लेते हैं. EIA में इसी पर विरोध किया जा रहा है. तो यही बात है ना, जो निजी क्षेत्र है आज अपनी जो सीमा है ये भूल चुका है और उन रास्तों को चुन रहा है जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी करती जा रही है. अब इसके विपक्ष में आते हैं. हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि जब हम कोई भी नीति लाते हैं तो निराशावादी सोच रखने के कारण हमारी नीति खराब हो जाती है. लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको उसके साथ जो निजी क्षेत्र है वो मिलकर दोनों एक साथ देश के आर्थिक विकास में सहयोग करें. उसका ही उदाहरण है दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजेक्ट. ये सब उसी के ही उदाहरण है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उदारीकरण जो नीति है ये सही है, परंतु जो राजनीतिक फेरबदल होते रहते हैं प्रत्येक समय. राजनीति जब कोई राजनीतिक पार्टी आती है तो वो कोई नया कंसेप्ट लाती है. अब लेफ्टिस्ट आती है तो वो नया कॉन्सेप्ट है. इसके कारण जो कई नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दूसरे सरकार द्वारा वो ढप हो जाते हैं, जिसके कारण यह होता है कि अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्या लगती या आधा प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता है. ये सब समस्याएं. तो मुख्य मुद्दा आर्थिक उदारीकरण नहीं है, यहाँ राजनीतिक पहलू है. चाइना उदारीकरण को लेकर कृषि क्षेत्र में इतना अत्यधिक आगे जा चुका है. वहां के लैंड है वो भारत की लैंड से कहीं अत्यधिक कम है, लेकिन वहां कृषि उत्पादन अत्यधिक होता है जो भारत की उत्पादन से कहीं अधिक है. तो इसी में हमें समझने की बात है कि हमारे जो राजनीतिक पहलू है ये सबको हमें समझना पड़ेगा. उदारीकरण सही है, परंतु इसमें हमें संरचना को दूरदर्शी नेतृत्व से देखना चाहिए, तभी यहाँ हो सकता है कि उदारीकरण को सही माना जा सके. यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद Pikesh. Next up we have slot number 15, Miss Charu. Are you here in this meeting? Yeah, I'm here in this meeting. Am I audible and visible? You are not visible. You are audible.
Do you Okay. have you logged Yeah. in with two devices? Yeah. It's a laptop and a phone because there's some problem. Am I audible and visible now? Yes, in one device you are audible and one device you are visible. Yeah, yeah, Okay, yeah, cool. yeah, yeah, yeah. So I've joined the audio from Cool, my cool. phone and video from my laptop. Okay, okay. And you'll give me like, can you please write when 2 minutes are over and when 30 seconds are left in the chat box itself? Yes. Wait a second. I'll time myself. Sure. Just let me know when to start. Okay, Charu. 3, 2, 1. We can start now. Okay, so let me take you back to the comparison between periods before and after economic liberalization. If you look at the period before the economic liberalization, the economy was growing slow, but it was sustainable. On the other hand, if we see the effects of increasing of economy after the economic liberalization, yes, the pace has hastened up, but then again, it's unsustainable. The carbon footprint that we used to produce before the economic liberalization is much less than we produce today. Typical example of this is the National Mission for Clean Ganga. Rupees 20,000 crore have been invested in this project, and then again, the National Green Tribunal has labeled this project as a failure and said that not even a single drop of River Ganga has been cleaned with the help of this project. This is a critical example of the myopic economic growth we are running through. One of my friends, the participants in this event, mentioned that economic liberalization is just about people and not about animals or plants, etc. But let me remind you that it's not just about, even if it's just about human beings, if plants and animals and the ecosystem, it actually degrades, we are the ones who will be unable to live. The capital of our country, Delhi, has become the gas chamber nowadays. Yes, it's about the people. Economic liberalization is about the people. But what is economic liberalization of use if we cannot even breathe, if we cannot even get clean air to breathe? We have these oxygen cylinders people carrying with themselves and bars that provide oxygen, literally oxygen. Then what is this economic liberalization we are running after? And in this scenario comes the EIA draft 2020 that tells us that the industries can run without clearance. That is the kind of economic growth we have been pursuing. Why do we want our industries to grow on the cost of human beings losing their lives? The respiratory diseases that were faced by people uh, before economic liberalization and the statistics after economic liberalization have been vast. But if we look at the opposite side, then economic liberalization was the need and necessity of the time when it was introduced. After the failure of the third five-year plan, and then what after in the reign of P.V. Narasimha Rao, it was very important to introduce economic liberalization to uplift the economy. Else, the economy would have been degraded to an extent that we would have been in extreme poverty and hunger till date. So economic liberalization was the need of the hour, and government has taken sufficient measures. There are policies that have to be followed. Government is taking sufficient measures to, and also if we look at people today, people are becoming more environment conscious, and also the MNCs and the industries that have been set up, or if we see the very common brands like McDonald's or KFC, they actually use things that are environmentally friendly. For example, earlier they were using plastic straws, but now they are using paper straws. So this is how people and the country, the citizens of this country and government is becoming conscious towards the environment. Also, before 1991, that is before economic liberalization, we were completely dependent on the natural resources. However, after 1991, that is after economic liberalization, we have followed the scientific management path, and we have adopted more technology and more innovative techniques to reduce the exploitation of resources. And looking at the massive population in this country, if we completely depend on natural resources as we used to depend on natural resources before economic liberalization, then that would harm the environment more. In a nutshell, I would like to say that economic liberalization and
economy and environment actually go hand in hand, and no one can make them fall apart. And if we do, then we are the ones who are at loss. Thank you so much. Okay. Thank you very much, Charu. So, by this last entry, we conclude our debating competition. Since I'm a debater, I was like really intrigued in the process as whole. It feels great to be surrounded by such wonderful debaters. The arguments were well constructed, and I wish you all the best. You all are winners, but final judgment will be passed after some time. So next, so for that time being, we are going to learn something about green crackers. So crackers we all have heard, but what are green crackers? Next, we will be taking up in this session. Ashu, can you please present the screen for green crackers, and Shreya will take up the stage. Okay, Charu, welcome. We will certain about the certificates afterwards, but for the time being, Shreya, we can continue with the presentation team and yeah, green crackers. Okay. Hello, am I audible? Yes, Shreya. Hello everybody, I'm Shreya and today I'll brief you about what green fireworks are. Diwali is the festival of lights that brings good luck, happiness and prosperity to all. The lighted diyas not only illuminate the environment but also has to shake the darkness of poverty and ignorance. But are we able to understand and appreciate the real fact that we are moving away from the real spirit of the fiesta of light? Crackers contain toxic compounds like copper and cadmium, and due to change in the weather, these particles mix with fog and become smog, causing various health problems like asthma attacks, bronchitis, etc. It's high time that we people should recognize the problem and should build a roadway by which we can make a healthy and balanced environment. If one can stay away from bursting crackers to celebrate Diwali, the best way is to stick to eco-friendly crackers, also called green fireworks. Now let's talk more about green fireworks. You might be wondering what green fireworks are. These are firecrackers made with reduction in size of shell, elimination of ash usage, etc., reduced usage of raw materials in the compositions of uniform acceptable quality, and use of additives as dust suppressants to reduce emissions, with specific reference to particulate matter, leading to a minimum of particulate matter reduction of 30%, a minimum of particulate matter reduction of 20%, and rest 10% of gaseous emission or more reduction of gaseous emission. All of the above reduction shall be based on when compared with conventional composition for a given category of crackers. In green crackers, the commonly used polluting chemicals like aluminium, barium, potassium nitrate, and carbon have either been removed or reduced by 15 to 30%. Basically, green crackers don't contain barium substance, which can cause burns, poisoning, and death. These crackers have unique property of releasing water vapor, air as dust suppressant, and diluents for gaseous emissions that match with the performance and sound with traditional conventional crackers. First phase of producing green crackers is focused on reducing pollutants and then removal of pollutants from the composition. Green crackers will reduce at least 30% emission using particulate matter potassium nitrate as an oxidant. Now let's talk about the different types of green firecrackers. Green fireworks are basically divided into three categories which are as follows. The first is safe water releaser, which reduces particulate matter by 35%. The next is safe thermite cracker, which reduces particulate matter by 40%. And the last is safe minimal aluminium, which reduces particulate matter by 40%. This includes Chinese crackers, atom bombs, flower pots, pencils, and sparkles. Now, let's look at some facts about green crackers. Green crackers are being formulated by National Environmental and Engineering Research Institute.
Only those green crackers will be sold that consist of unique logo along with a QR code on box. The green crackers, however, have the matching sound intensity with the commercial crackers, that is 105 to 115 A-weighted decibels. Now the question is how you can make this Diwali eco-friendly. By using good old-fashioned diyas. Instead of using lightings, use biodegradable diyas. Avoid crackers, green or not. Crackers produce pollution, so avoid bursting crackers. Keep it simple. Instead of doing high-end decoration, keep things simple and spend time with family. The theme of the green world is spreading all over the world, and it is our responsibility as well to maintain and uphold a better and safe society for ourselves. Come and do a bit for society this Diwali. Don't forget to encourage others to celebrate an environmentally safe and secure Diwali. Thank you all for listening with great patience. Now over to you, Ashu. Thank you so much, Tanya, for such a wonderful presentation. It was really meaningful to not burn crackers because we know Delhi's air is at the worst quality ever, and we need to control our use of crackers. And now, coming to the end of our event, I would like to thank our professor, Dr. Harleen ma'am, teacher conveners, and our special guest, Dr. Anurag Pandey sir, and all of our dear friends for joining this event and participating in it. It was a really wonderful debate competition carried out very, very smoothly. And that's all. Thank you so much for joining it. Okay, thanks, Ashu, for the vote of thanks. I would like to thank all the participants. We can wait for 5 or 10 minutes so that the results are being released in the meeting itself. Uh, for the time being, I would like to share that we have our EcoClub DSC page. You can follow us on Instagram, and we'll be soon launching our YouTube channel on which this whole meet will be provided about us, about EcoClub. EcoClub has been um, had a superb journey like throughout years, and will be working towards the betterment of our environment, our surroundings, and for the well-being of the future generations as well. So I overwhelmed, and thank you to all our teachers. Firstly, I would like to thank Dr. Anita Goel, who is a principal of our college, our professors, Dr. Harleen Dabar, who is our convener, Dr. Jasleen ma'am, Dr. Sadhna, Dr. Rumar Shankar, and our esteemed guest, Dr. Anurag Pandey, who is also judging the competition. Special thanks to the organizing team for making this event a great success. Without you, it wouldn't have been possible. So, concluding with that, we can wait for 5 to 10 minutes. We are calibrating the results. Thank you very much.
Okay, if anyone has to share something, a poem or their thoughts, they can share and write it in the chat box. Yeah, Tanya, shall I announce the result? Yes, sir, sure. Yeah, actually, there are, you know, um, I have heard so many good presentations here. बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बच्चों ने मेहनत करी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना पॉइंट को रखा और जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन था, कंटेंट था, रेलेवेंसी था, इसके बेसिस पर मैंने सबको जज करने की कोशिश करी, जो एक ट्रेंड है हमारे कॉलेज में भी ये देखने का। और लगभग सभी बच्चे अच्छा लिखे उन्होंने और अच्छा बोला भी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ रही आपके इस पूरे एंटायर प्रोग्राम की और जो डिबेट कंपटीशन एक हुआ उसकी, और जो कि बहुत अच्छी है कि यंग जनरेशन काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। हाँ, and they are learning as well, so this is really very impressive. This is first thing I want to say, and there is time to announce as usual the winner. I'll say Raghav Maheshwari, right? He has secured 9 uh, according to my own parameter, and there is 3 more candidates like Abhyankar, Charu and Nidhi. इनका टाई अप हो गया है, टाई हो गए हैं ये। ऑल ऑफ देम हैव सिक्योर्ड 8 मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल्स अंडर ईदर 6.5 और 7। तो बहुत क्लोज इसको आप कह सकते हैं कि ये कंपटीशन है। देयर इज वन मोर नेम, चारू कौर अरोड़ा with Raghav. She has also secured 9 marks. तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक तरीके से टाई हो गया है। तो मुझे नहीं पता इन दोनों का So प्रेजेंटेशन। these two names have a tie, so we can give them a chance to rebut and interject each other. Yes, that's what I'm asking. So, sir, if there's a tie between Charu Raghav. and Raghav. And what was the third name, sir? Third name was Abhyankar. All right. So, sir, okay, sir. So we need to have a rebuttal case between Charu and Raghav. Raghav. Okay. Charu and Raghav, are Also, you here in this meeting? Ashu, can you please stop presenting the screen? hi, I'm here in the meeting. I think Raghav spoke in Hindi, so you'll somehow have to, translate things because because there are some specific words in Hindi that are not, it's No, difficult no, 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 vocab no. basically. Communication is not a barrier here. You can be and express whatever you like. We will provide you 2 minutes each. Okay. So you Topic just is the have to give same. a conclusion. You just have to give a conclusion of your points. That's it. Don't go for pros and cons. Just you can give a 2 minute thing, and then you can have an interjection with each other. Okay, The give me a defense will be second. I'll counted. have to. The defense, Hanji. Yeah, I'll have to turn my laptop on. So just give me a second. Yeah, actually, I'll wind it up. Okay. So you would like to go first, Charu? No, I'll take some time. I'll just have to switch it on and set up Okay, everything else. Raghav, if you are ready, you can proceed with 2 minutes. If you have any doubt regarding this rebuttal
Okay, this interjection phase, you can ask. Ma'am, before we begin, I want to point out something. Anji. Due to constant network fluctuations, I was not able to hear the last three or four participants properly. So will that be a negative from my side? No, 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 no. That would not be a negative. See, we have a tie-up between you. See, we have a tie between you and Charu. So that we want to resolve by the interjection phase. So, Okay. like Raghav will speak for 2 minutes, then I'll speak for 2 minutes, and then both of us will interject each other, right? Anji. Okay, okay. I think Tanya, even for the second position, there is a tie between Abhyankar and Nidhi. तो वो लोग भी ready रहे, Yes, ma'am. है ना? वो दोनों भी ready रहे and same conditions for both of them also. तो एक बार फर्स्ट पोजीशन डिसाइड हो जाएगी, दोनों का हो जाएगा, चारू और राघव का, देन वी कैन हैव बिटवीन निधि एंड अभ्यंकर. Yes, ma'am. तान्या मैम, वन कंफ्यूजन. हाँ जी. मैम, जो आपने बोला है कि 2 मिनट का स्पीकिंग टाइम है, तो लाइक अर्लियर वी स्पोक इन अ टर्न कोड फॉर्मेट. ओके, It's just a conclusion. See, what you have to do is give a conclusion of your points. Don't go with the pros and cons like you did in the turn code. We have already heard you. Okay? ओके, क्लियर मैम, थैंक यू. We have already heard you. So conclusion ही देना है 2 मिनट में. उसके बाद आपका 1 मिनट का इंटरजेक्शन टाइम है. That I'll be counting on my stopwatch. डिफेंस के बेसिस पे और जो भी हमारा प्रोसीडिंग्स होता है डिबेट में यूजुअली, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन डिक्लेयर कर देंगे. So see, there's a tie between the first and second position. Okay, Charu and Raghav, you are competing for the first position. So whoever lapses, that person gets the second position. And for the third position, there's also a tie between Abhyankar and Nidhi. So please get ready with your conclusions and interjections. Am I clear? स्टार्ट करें. Shall we start with Charu, Nidhi? हाँ जी अनुराग, आप सही बोल रहे हैं. चारू. हाँ जी मैम, जी मैम. Yeah, am I audible and visible? Yes. Is it clear, right? It is clear, right? Your video isn't. Your video is there. Yes, Charu. Yeah. Oh, so you'll put in a reminder in the chat box at 1:30, please. Okay, wait. Wait, here I'm adding. Is my voice lagging? Like, is my voice lagging right now? I feel so. Actually, your voice is not lagging, your video is lagging. Voice is clear. Okay. You can switch off your video, Charu. It doesn't matter. हम लोग सुन properly लें आपको, वो ज़्यादा We have important. already heard your points. Yeah. Yes, ma'am. You can Wait. start now. You can start. Ma'am, वो उसका stopwatch है ना? Just a second. I'll just read on. Just a second. 3, 2. Okay. Just a second. Just a second, Panya. All right, Charu. Yes, it's fine now. I hope it's not lagging anymore. It's not visible only. नहीं तो क्या ताने मैंने ही बोला है कि Okay, ma'am. सुन ले वीडियो ऑफ करने से अगर
Charu, It please will not start. count in negative marking or etc. No, no, Like, no negative We marking with we that. have already seen your face. We recognize your voice now. It is not as if an anonymous person is speaking. So you can now start speaking. 3, 2, 1. so no one can deny the fact that economy and environment go hand in hand. If we leave economy behind, if we ignore economy, then we'll have nothing to eat, nothing to wear, nothing to live for. And if we ignore environment, then environment won't let us live. Because nature has its ways to take the revenges, and nature has its ways to show us the repercussions of the choices we make. So no one can deny this fact that economy and environment go hand in hand. Economic liberalization was very important at that point of time, is what I have already mentioned. But then again, the government should have taken enough steps to ensure that the environment is not being affected. Yes, there are policies. Legally, we have achieved a lot. But on the ground level, those policies are not implemented. We do not ask for new policies. We ask for the implementation of the existing ones. The industries have been working for over 2 decades or 3 decades without clearances. That is not the way it works. If we are focusing on economy, if we are promoting our industries, then we also need to focus on the environment, and we need to check the industries on a regular basis over a period of time. The Kasturi Rangan Committee report is an evident example of the myopic economic growth we have been following. The report constituted measures for the conservation of the Western Ghats by the government of Karnataka. Also, if we look at the loss of biodiversity, the degradation of virgin forests, and the increasing impacts of environmental change and climate change, we can deduce the fact that yes, environment is being affected, and no one sitting in this room can deny that. Also, if we concentrate on the EIA draft 2020, if the draft has been made, Okay, the then time is there over. have been 2 protests minutes against have it. passed. Charu, you can stop. Any interjections, Raghav? Yes. मैम Please आप go कह ahead. मैम आप कहती हैं एनवायरनमेंट और इकोनॉमी साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब हम आर्य कारशेड और आर्य फॉरेस्ट का केस देखते हैं, तब कारशेड बनाने के लिए जब आर्य फॉरेस्ट को काटा जाता है, और जो कि कारशेड उस जगह पे बनाने के लिए सबसे वह जगह सबसे ज़्यादा फीजिबल है उस चीज़ को बनाने के लिए, तो फिर क्यों हमें इस चीज़ का विरोध देखना पड़ता है? क्योंकि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे चला पाएंगे? Shall I answer in Hindi or in English? Whichever language suits you, dear. Okay. So, If sir, it I has been in mentioned English, like go we for have. English only. Committed to one language. 30 Okay. seconds only left. Okay. So I already mentioned that economy, environment go hand in hand. If one particular place is suitable for the growth of one thing, then we definitely have to sacrifice it. But on the same hand, we have to take measures that something can be done to reduce the effects of it. We are moving towards a need-based economy. We are moving towards a want-based economy instead of a need-based economy. That is where we are suffering. We have to follow the path of development, but we have to take environment into consideration. If we cut a tree at one place, we have to plant 10 trees at the other place. We have to work in a counterbalance. That is my point. Okay, interjection time is over. Thank you, Charu, for the defense and rebuttal. Raghav, may you please present your 2 minutes conclusion on the topic? Okay, ma'am, I'm starting. Please switch on a video if you're comfortable. Am I visible and audible? Yes. सो अंत में जो मुझे कंक्लूजन करने का समय दिया गया है, उसमें कंक्लूजन के साथ साथ मैं ये जो हमारी समस्या है, जब हम विकास की बात करते हैं, हम आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है पर्यावरण से, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों से। तो मैं अंत में 2 मिनट में इसका हल देना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं आर्थिक उदारवाद की, तब हम बात करते हैं कि कैसे जो छोटे उद्योग हैं उनको हम
आगे लाएं, उनसे जो उपभोग है वो आगे लाएं, लोगों की समस्याओं को दूर करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करें, सुदूर क्षेत्र है उनका विकास करें। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार ये विकास जैसे जैसे होता जाएगा, हम पर्यावरण को अगर कहीं भूल चूक से नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई करें। हम अगर विकास करते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई सरकारी भवन बनता है, कोई सड़क बनती है, तो अगर अगर भूमि अधिग्रहित की जाती है, उसको वन नष्ट किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, तो वही पेड़ों को हमें ऐसी बंजर जमीन हमें तो वही पेड़ों को हमें उन्हीं भवनों के आंगन में लगाना चाहिए, उन्हीं सड़कों के किनारे लगाना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम देखते हैं, जब हम बात विकास की करते हैं, भूमि अधिग्रहण की करते हैं, तब सबसे पहले हम कोशिश ये करें कि वन को काटने की जगह हम जो बंजर जमीनें हैं, जिनका खेती बाड़ी या फिर जिनका जो उपजाऊ नहीं रही है, जो खेती बाड़ी में काम नहीं आ सकती, हम उनको निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लें। इसके बाद जब बात आती है प्रदूषण की, जो आज सबसे भयावह स्थिति, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, हर साल जब धान की कटाई होती है, उसके बाद पराली जलाई जाती है, तो किस प्रकार पूरे दिल्ली में एक धुंध की चादर फैल जाती है। तो इसके लिए हम देखिए, हम पोल्यूशन का बहाना देंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ धान की खेती नहीं रोक सकते। और दोनों चीजों को जब हम साथ लेके चलेंगे, तब हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हमारा प्रदूषण भी कम हो और जो हमारी पराली जलाने की व्यवस्था है वह और सुदृढ़ बनाई जाए। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे। जो पराली किसान जलाने के लिए मजबूर हैं, उसके लिए उनको Time's up, Raghav. Any interjection, Charu? Yeah, so you mentioned about what all steps we should take, but if we actually look at the government already has made policies, but they are not being implemented. So why do we want new policies, and what can be outcome of these policies? मैम, जैसा कि आपने कहा कि नीतियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो हमें सबसे जरूरी यही चीज है कि अगर हम नई नीतियां ला भी रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, एक चीज होती है नीति बनाना और दूसरी चीज होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पे लागू करना। तो यहाँ पे जैसे कि पिछले जो हमारी पुरानी नीतियां हैं, उसमें जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है नीतियों की डेफिनेशन, उनकी परिभाषा। लेकिन जब हमें जरूरत है कुछ ऐसी नई नीतियों की जिसमें डेफिनेशन तो स्ट्रॉन्ग हो ही, जिसमें प्रावधान स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उन प्रावधानों को जमीनी स्तर पे लागू करने की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। Okay, rebuttal time over, Raghav. थैंक यू मैम। जब तक अनुराग सर डिसीजन ले रहे हैं तान्या, तब तक दूसरा वाला भी कर लेते हैं, अभ्यंकर और निधि के बीच में। Hello, Tanya. Am I audible? Yes, ma'am. Next up we have Abhyankar and Nidhi on the floor. Abhyankar, would you like to go first? Ma'am, if the other speaker doesn't have an issue, then I would like to go second. Okay. Nidhi? Nidhi, am I audible? So there might be some issue. You have to go first. Wait a second. I will resume my stopwatch. Ma'am, that is fine, but I guess ma'am said that Anurag sir is finalizing the result for the first round. So when he's done, we should By start that after that. time, we want that the third place all round also clears. Fine, ma'am, no issues. Okay, you can start. 3, 2, 1, go. सदन की गरिमा को पुनः मेरा सादर नमन। जैसे कि मैंने पहले जो मुद्दे रखे थे, जो पहले जो बिंदु रखे थे, वो ये कुछ इस प्रकार थे कि पूंजीवाद की तरफ बढ़ना है वास्तविकता में आर्थिक उदारीकरण, समाजवाद या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है आर्थिक उदारीकरण। तो इसका जो उद्देश्य है वो तो जो चुना गया है पूंजीवाद वो है, लेकिन जो वास्तविकता में तरीका मनुष्यों द्वारा चुना गया है, उसकी वजह से जो शोषण होता है वो कारण बनता है कि क्यों
ये भारतीय वातावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि सबसे पहली बात, जो पूंजीवादी है उनको चिंता ही नहीं होती इस बात की कि उनके वातावरण में क्या हो रहा है, कैसा, और क्योंकि उनके पास पूंजी अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, और जिनको वो शोषित करते हैं वो चाहकर भी चिंता नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चिंता इस बात की होती है कि पहले हमारा जीवन बचे, हम जीवित हो सके। तो वो ये नहीं सोच पाते हैं वास्तविकता में कि क्या प्रकृति के लिए लाभदायक है, क्या प्रकृति के लिए हानिकारक है। उनको ना चाहते हुए भी उनकी प्राथमिकता उनका व्यक्तिगत हित बन जाता है। तो ऐसे में आर्थिक उदारीकरण भारतीय वातावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए हानिकारक है। परंतु दूसरा पहलू देखिए कि वास्तविकता में उदारीकरण नहीं, उसके लिए जो अपनाया गया तरीका है, समस्या उसमें है। आप अन्य तरीके अपना सकते थे, प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा की तरह रखते। आपको ये बोला गया है कि व्यक्तिगत हित की बात है, समाज की चिंता नहीं करनी है, आप समाज की चिंता ना करिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप समाज का ह्रास जो कर रहे हैं, क्योंकि आप शोषण कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चिंता है एक आंतरिक रूप में कि हाँ, मेरे अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं वो कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए, तभी आप शोषण कर रहे हैं, वरना आप सिर्फ अपने पर केंद्रित रह के बात करते और अपनी बात करते। तो यहाँ पे समस्या आपके अपनाए गए तरीके में है, ना कि वास्तविकता में उस उद्देश्य में। क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में आपके हाथ में सारे नियंत्रण दिया गया था। ये नहीं बोला गया था कि आर्थिक उदारीकरण को जो इंप्लीमेंट करना है, जो धरातल पे आपको अपनाना है, वो इन माध्यमों से अपनाना है। आप सतत विकास का तरीका अपनाइए, आप प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा रहने दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको युद्ध में परिवर्तित करें, तदुपरांत ही आपका उद्देश्य पूर्ण हो सके। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद अभ्यंकर। निधि, अब मैं आपसे आपका कंक्लूजन जानना चाहूंगी। मैम, इंटरजेक्शन। यस, हर इंटरजेक्शन। निधि, आर यू देयर? Okay, if she's not coming in 2 minutes, you'll be declared third place itself. Nidhi, wait a second, I'll call. Fine, ma'am. It might be some network issue. So, Ma'am, like if she has heard my speech, then she can put her interjection in the chat box as well. Helene ma'am, I'm not able to reach out to her. I have messaged, but no response. And call is also not picking up. So, ठीक है तान्या, we'll leave her then. उसको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे later on. Though I can see her as participant, but she's not replying in any ways, ना chat box में ना कुछ, तो we can't help it. Yes, अनुराग sir, आप please declare करें results. Whenever you are ready, we are waiting. Yes, sir. Yeah, thank you very much, ma'am, and all the students. After this 2-minute presentation and interjection, the first position goes to Raghav, and second to Charu, and third automatically goes to Abhyankar, if I'm not wrong. Yes, sir. Super. So we had a great participation today, and the winners are already being announced. So congratulations to the winners, and happy debating. एक चीज मैं बोल दूं तान्या, every participant will get a certificate of participation, and we really value your contribution to the program, and keep up the good work, and maybe next time you'll get one of the topmost prizes also. So congratulations everybody to the
participants and also to the winners. And thank you, Anurag sir. Thank you for joining us and sparing your valuable time for the program. And over to Tanya again. Tanya, can we wrap up the session now? Yeah, thank you very much, ma'am, and thank you, everyone, and congratulations to all the winners. So we are concluding the meeting today. We had a great time with you all, and keep up the spirit, keep up this debating spirit, because a healthy discussion is always necessary for us to take, viable decisions. And decision making is quite improved when we argue and points are being recollected. So thank you everyone for joining in. Bye bye. Take care and be safe. It's Corona time. So, okay, we are concluding the meeting. You can start leaving. Thanks, Tanya. Thanks to the Thank you, ma'am. organizing Thank you, team. sir. And take care, sir. Thank you very much, Harleen, ma'am. Thank you, sir. And thank you, Tanya. Thank you, ma'am. Akash, And thank you, sir. and Pratiksha, all of you, the entire Eco Club Society. Thank you so much for having this wonderful event today. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Yeah. Thank you very much, Harleen, ma'am. Thank you so much. Goodbye. Goodbye. Have a good day, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, मैम आप recording stop कर सकते हैं? हाँ जी, just a second.